Hi, young thinkers. I'm Rohitan Patra, your host of the evening, and I thank you all for tuning in for our first episode of the Tinker Talks. Young Tinker Talks is a special series of podcasts brought to you by Young Tinker Academy, Young Tinker Foundation, where we invite innovators, entrepreneurs, and change makers to inspire us with the talks. At Young Thinker Academy, students are given hands on learning on 3D printers, soldering, drilling, design thinking, and much more. We regularly conduct TED Talks, design thinking classes to enhance the communication skills, confidence, observation skills, and problem solving capabilities of the students. We'll be having some exciting Q&A sessions, so stay tuned to the end. We'll start today's podcast with a special guest. Because of the exposure he got during his civil engineering course, he decided to bring education to his village rather than children going out for education. He created an academy where students don't read books but get practical knowledge. He is also a recipient of National Youth Awardee. His team of 10 students won the World Rank 3 at NASA Herc 2021. Yes, you guessed it right. There's no other than Sri Anil Pradhan, sir. Sir, I most heartily welcome you. Thank you so much, Rohitansh, for welcoming me to the first ever Young Tinker Talks. It was nice to learn how you guys are organizing these talks, right from the presenter to the one who is connecting this to the YouTube and streaming and everything going on. So, thank you so much. You're welcome, sir. So, sir, we would just like to know how your journey started from the village in Cuttack to here in Young Think Academy. My journey started with kids like you. It started with three students in an island village in Bhubaneswar, Baral, and we provided with them with the hands-on learning that you all were talking about, and the kind of indigenous students we started right from 3D printing, soldering, 3D, and robotics and all, and eventually this three students became 124 in the very next year to 1,000 to 50,000, and now we are impacting 150,000 students across the globe. And Rohitansh, you are one of them. Uh, so the journey was really nice, and the kind of brand we always wanted to create, the Young Tinker brand, it is now recognized worldwide with coming of the World Rank 3 at NASA Rover Challenge, and students, young students starting their own company, getting funded by the known faces, getting funded by known companies like Microsoft, Google, Intel, and all. So that kind of journey started with just three students, and this shows what can be done when a youth, when a student, when a young student like you start and can go anywhere. Yes. So, sir, it was really very inspiring for us. So, how did you get your idea about starting an academy? So the idea was initially my idea was how can I impact education to the students there in the villages in my own village. So I started my journey from Baral, which is a village in Bhubaneswar. So Bhubaneswar is actually a group of 42 villages. So I started my journey on how we can educate the students there and how we can provide them with practical education. That was the need of the hour. uh, Eventually, like initially I didn't knew like someday I'll come, and then students from across the globe will come to learn here in our academy. But when we started, it was just my own village. So the basic problem was how can I bring in hands-on learning to them. The biggest problem was we don't have indigenous content. For example, if we see there is no content in Odia for 3D printing, soldering, and all. And at the same time, our education system back in 2015 was not that good, and we were not having that hands-on learning in any other school as well, where we focused more on grades only. But eventually, that has to happen. When we started with three, the idea was good.
We got a lot of traction from people across, and because of students like you, we came to Bhubaneswar, to a lot of villages, to India, and now to the world. So this is a made in Odisha product, made in Odisha for the world. Yes. So, last year, you and your team had won the World Rank 3 at NASA Human Rover Challenge. So, sir, how did you prepare? Like, what was the mindset for the team? So the mindset was, as I have already told you, when we started with three students, people told ये नहीं हो सकता, you can't do this. ये बच्चों के साथ ऐसे चीज़ें नहीं की जा सकती है. We proved them wrong and we did it. When it was about NASA rover challenge, at that point of time people told, अरे यार इंडिया से तो ऐसी टीम कभी निकली नहीं है, तो आप कैसे बना लेंगे इसमें से, और आप अर्बन रूरल सारे बच्चों को लेके, हाउ कैन यू डू इट मैन, दिस इज इम्पॉसिबल. There are good schools across, there is big schools across, they are not going, how can you do it? So it was sheer motivation, the motivation of our students like you, as I've already told. They're highly motivated, they already want to do something in life, and they did it. We started with the very first phase, बोले जो भी करेंगे आराम से करेंगे, अच्छा करेंगे, विल डू इट. और फिर जो काम होना शुरू हुआ, फिर जो 10 बच्चों ने काम किया, इट वाज माइंड ब्लोइंग मैन. I couldn't believe कि those 10 students could do this thing in the very first phase when we selected them. But the kind of motivation, they were like God level motivation. And then when we taught them कि this is the topic, this is how we have to make, this is the skills that we have to learn. There was a girl who was doing welding. तो बोले इसको welding करते हैं, why not you weld the rover? She was like, yes sir, I can do it, I'll do it. They did it. So everything thing there was done by students, and once we did it, the rest is a history. Now every student is aspiring, यार यदि वो 10 बच्चे जा सकते हैं, why not we? And that is exactly what we want to tell people, कि यदि ये बच्चे कर सकते हैं तो कोई भी बच्चा कर सकता है. And this is possible here in Odisha, here in India. So, you're winning at the NASA HEC 2021 became like an idol for the rest of the Indians. Like, Yes. their mindset just changed. Before it was like Indians can't do this, Indians can't do that, but now they're like, yes, if they can do, why not we can also do, we have already done it. So now So everyone is dreaming. So yeah. dreaming is the most important thing. If you can't dream, you can't do anything. सो पहले Yes. सपना देखना सीखा जाए, पहले सपने देखा जाए. बहुत सारे सपने पूरे होंगे, बहुत सारे सपने टूटेंगे, बट जो सपने देखेगा, दे विल ग्रो, दे विल गो टूवर्ड्स वन डायरेक्शन. सपना कितना पाओगे कितना नहीं पाओगे वो दूसरी चीज़ है, बट देखना सीखना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. सो ड्रीम बिग, डू बिग. So यस. that was really very inspiring saying of yours. So when you started it, so who helped you in starting this? Like, from where did you get the funds and who supported you? एग्जैक्टली. तो आप जैसे अभी क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, तो यही चीज़ मैं फिर लोगों से तब पूछता था कि सर हाउ कैन आई स्टार्ट, पहला स्टेप कैसे लिया जाए. एंड ऑलवेज रिमेंबर, इट्स ऑलवेज अबाउट द वेरी फर्स्ट स्टेप. पहला स्टेप लगेंगे सबसे डिफिकल्ट होगा, दूसरा स्टेप भी डिफिकल्ट होगा लेकिन थोड़ा कम, उसके बाद डिफिकल्टी का लेवल थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाएगा. तो सब मैं भी जाके पूछता था कैसे करूँगा, क्या करूँगा. तो एक साल तो मैंने सोचने में लगा दिया जब कॉलेज में था, ठीक है कैसे करूँगा. बट थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग व्हेन आई एक्चुअली डिड इट. जब मैंने पहला स्टेप लिया एंड व्हेन आई टोल्ड, हे व्हाई नॉट वी स्टार्ट इट, वी डोंट हैव अ स्पेस, हमारे पास जगह नहीं था जहाँ पे जाके हम बच्चों को पढ़ा सकते थे, बिठा सकते थे, तो कोई स्पेस ही नहीं था हमारे पास. ठीक है, तो हमने बोला कि यार एक छोटे सा टिन शेड से शुरू करते हैं. वी विल ड्रीम बिग बट विल स्टार्ट स्मॉल. छोटे से स्टार्ट करेंगे और बहुत बड़ा ड्रीम करेंगे. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डिड. वी स्टार्टेड विद अ टिन शेड. 3 बच्चों ने, गराज जैसा स्पेस था, वहाँ से हम लोगों ने शुरू किया. एंड देन वहाँ से धीरे धीरे पता चला, अच्छा ये चीज़ काम कर रही है, ये चीज़ काम नहीं कर रही है, वी शुड डू दिस मोर, वी शुड डू लेस दिस थिंग, इसको ऐसे डिज़ाइन किया जाए, इसको ऐसे डेवलप किया जाए. देयर वाज अ टाइम व्हेन इन 2015 आज से 7 साल पहले, आई वाज थिंकिंग कि यार वी विल डेवलप सम प्रोडक्ट्स फॉर द वर्ल्ड हियर इन ओडिशा, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाया जाए जिसको हम पेटेंट कर सकते हैं, खुद का प्रोडक्ट होगा, ओडिशा का प्रोडक्ट होगा, यहीं से लोग निकालेंगे.
सो एट दैट टाइम वी डिडंट एक्चुअली हैव अ बेस, वी जस्ट हैड द ड्रीम। लेकिन जब हम लोगों ने पहला कदम लिया तो लगा कि अच्छा ठीक है, ये चीज़ भी हो सकता है, वी कैन डू इट। ठीक है, तो मुश्किलें आएंगी, मुश्किलों का काम ही है वो आना, वो आएंगे, लेकिन हमारा काम है उनसे सीखना और आगे बढ़ना। So every time you just have to take the very first step. If you don't take the very first step and always think about कि कैसे करें कैसे करें कैसे करें, डिफिकल्टी आएगी। पैसा कहाँ से आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। लोग कहते हैं फंडिंग बड़ा प्रॉब्लम है, मैं कहता हूँ कि फंडिंग कभी प्रॉब्लम था नहीं। अच्छा काम करोगे यू विल ऑलवेज गेट फंड्स। मेक ए गुड कंपनी, इतनी अच्छी कंपनी बनाओ, इतना प्रॉफिटेबल कंपनी बनाओ कि 10 लोग आपको बोलेंगे वी वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। किसको प्रॉफिट्स नहीं चाहिए, आपकी कंपनी यदि प्रॉफिट्स बनाएगी। सो ऐसी कंपनी बनाओ। एंड एंड बिलीव मी, इफ यू क्रिएट अ कंपनी लाइक दैट देन यू विल टेल सर आई डोंट नीड द फंड्स, हो गया, अब मेरे को लेना ही नहीं है, वी डोंट नीड द फंड्स। ओके, सो द बेसिक्स शुड बी वेरी क्लियर। डू समथिंग ग्रेट फॉर द सोसाइटी, क्रिएट अ प्रोडक्ट दैट विल इम्पैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल, एट द सेम टाइम फाइनेंशियल्स वुड बी गुड, और हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इन सब चीज़ों को करना है। एंड ऑलवेज थिंक बिग बट स्टार्ट स्मॉल। कभी कभी हम क्या करते हैं, या तो थिंक स्मॉल करते हैं जिससे कुछ बड़ा आउटपुट नहीं आता, या फिर बिग तो थिंक करते हैं बट एट द सेम टाइम वी थिंक यार बिग करने के लिए बड़ा स्टेप भी लेना पड़ेगा। अभी जितना बड़ा पाऊँ उतना फाड़ो यार, उससे ज़्यादा फाड़ने की कोशिश मत करो। तो छोटा स्टेप लेंगे, धीरे धीरे फिर उस स्टेप को बड़ा करेंगे, एंड वी विल रीच द गोल which we are expecting to do. Hmm. So, sir, if we, as a student, if we want to start an on a business, if we want to go into entrepreneurship, so how do we do it? What should be, what should we keep in our minds and start it? How to know the problems? How to see the problems? So it's really a nice question. I can see a lot of maturity in people like you, students like you, जो अभी से ये चीज़ सोच रहे हैं, because when we were there in the school 2010 की मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग ये चीज़ नहीं सोचते थे यार बिजनेस कैसे शुरू करेंगे, क्या करना है कैसे नहीं करना है, कुछ नहीं सोचते थे, क्योंकि हमारा एक अलग ही दुनिया में थे हम लोग। बट एक चीज़ हम तब देखते थे, वो प्रॉब्लम्स जो सॉल्विंग वाली जो चीज़ें होती थी, दैट वाज देयर इन अस, which made us realize कि there is a lot of problem which we need to solve। तो इस एंटरप्रेन्योरशिप में जाएं कैसे? तो पहली चीज़ ये है कि भैया छलांग लगानी पड़ेगी यहाँ पे। हर बार सोचेंगे जाएंगे कैसे करेंगे कैसे, तो नहीं होने वाला। सो वी हैव टू गो फॉरवर्ड फॉर इट। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव द राइट स्किल्स विद अस। तो इस स्किल्स को देखा जाए यार, यदि इफ आई वांट टू बिकम एन टेक्निकल फाउंडर, टेक्नोलॉजी मेरे को पता होनी चाहिए। इफ आई वांट टू क्रिएट सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, ये सारी चीज़ें मैं कहाँ से कर सकता हूँ। तो जैसे हमने आपको, आप ही ने सबसे पहले बताया कि हम 3D प्रिंटिंग और ये सारी चीज़ें करते हैं, तो ये सारी टेक्नोलॉजी और स्किल्स आप यंग टिंकर अकेडमी में लर्न कर रहे हैं। तो ये जो स्किल्स हैं, लर्निंग द स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। वंस यू लर्न द स्किल्स, देन बारी आती है एप्लीकेशंस की। खाली स्किल्स को आप लर्न कर लेंगे तो काम नहीं बनेगा, अब उसको अप्लाई करना है। देन यू हैव टू गो फॉर डिजाइन थिंकिंग के जो सेशंस आप करते हैं हमारे यहाँ पे, प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि यार एक प्रॉब्लम रोज हमारे साथ हो रही है लेकिन उसको मैग्नीफाई करके देख नहीं पा रहे हैं। कभी कभी प्रॉब्लम सामने होती है लेकिन दिखता नहीं कि प्रॉब्लम है, क्योंकि हम इतने यूज टू इट हो जाते हैं। सो उस प्रॉब्लम को देखना है, मैग्नीफाई करके देखना है कि यार ये प्रॉब्लम है। एंड वंस यू सी द प्रॉब्लम, देन उसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, कितने सोल्यूशंस हो सकते हैं, और उसमें से सबसे फीजिबल सोल्यूशन क्या है, एंड हाउ कैन वी सॉल्व इट। फीजिबल इसलिए बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन भी कॉस्टली हो सकता है जिसको लोग अफोर्ड नहीं करें। आइडिया, आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है, आपने बिल्कुल उसका प्रोटोटाइप बना लिया है, लेकिन यदि कॉमन मैन उसको यूज नहीं कर रहा है, देन देयर इज नो यूज ऑफ हैविंग दैट प्रोडक्ट। वो सिर्फ आपका स्किल्स तब के लिए एनहांस कर रहा है, विच इज ओके फॉर यू, बट यदि आप इसको बड़े से बिग पिक्चर में देखें तो इसका कोई यूज नहीं है। तो हमारा काम यह है कि हम स्किल सीखेंगे, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स सीखेंगे। जैसे आप आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपके भी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। आप पूरे टीम, एक टीम आज पूरी इस यूट्यूब, एक स्टूडेंट्स की टीम है जो क्लास 6 से 12 तक है, जो आज इस पूरे स्ट्रीम पर काम कर रही है। कैसे लोगों को हम इनवाइट भेजें, कैसे मेल्स लिखें, कैसे स्पीकर को इनवाइट करें, कैसे लोगों तक रीच करें, कैसे बच्चों को इकट्ठा करें, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो ये भी सब एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट आपका डेवलप कर रहा है।
तो ये छोटे से स्टार्ट किया है, छोटे से हम लोग को फिर बड़ा करना है इसको, इस टीम में ज़्यादा बच्चे कैसे आएंगे, तो ये मैनेजमेंट आप सीख रहे हैं, इसे कहते हैं हैंड्स ऑन। कंपनी चलाने के लिए या कंपनी बिजनेस बनाने के लिए कोई कोर्स नहीं होता है, it's always hands on. Once you learn this hands on, तो आपको पहले से पता चल जाएगा हाउ टू मैनेज पीपल, हाउ टू लीड अ टीम, हाउ टू डेवलप अ प्रोडक्ट, यदि प्रॉब्लम आता है तो एकदम से कैसे सॉल्व करें, ये सारी चीज़ें आपको आनी ज़रूरी है व्हेन यू लुक फॉरवर्ड फॉर एन एंटरप्रेन्योरियल थिंग। ठीक है, और एंटरप्रेन्योरियल ज़्यादा होता है कॉमन सेंस, इट्स मोर ऑफ कॉमन सेंस एंड लेस ऑफ डिग्री। डिग्री नहीं बोले तो भी चलता है, ठीक है, यू मे नॉट हैव ए डिग्री एंड एट द सेम टाइम यू कैन बी अ गुड एंटरप्रेन्योर। Yes. So we have a last question. हमारे एक viewer शेवल पटनायक. So he is from class 7 and उसने एक क्वेश्चन किया है कि सर मैं मतलब हमारे बहुत सारे स्टडीज़ हैं एंड मुझे एट द सेम टाइम को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करना है, तो मुझे टाइम नहीं मिलता, तो सर कैसे टाइम मैनेजमेंट करूँ? अच्छा क्वेश्चन है। टाइम मैनेजमेंट जो है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों का, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास ऐसा रहता है कि सर मैंने इतनी सारे बुक्स हैं हमारे पास, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, और हम इन सारे सब्जेक्ट्स को कब पढ़ें और ये सारे जो सपने देख रहे हैं इनको कब पूरा करें। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि ये तो सबसे पहला टेस्ट है आपको एंटरप्रेन्योरियल जर्नी का, ये पहला टेस्ट है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर के पास भी 10 काम होते हैं, उसको प्रायोरिटाइज करना रहता है कि विच इज़ VVIMP, कौन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विच VIMP वेरी इंपॉर्टेंट, और कौन सा IMP इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो टैग है वो आप ही को डिसाइड करना है कि वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ है, उसको उसके प्रायोरिटी के हिसाब से आपको रखना है। और जब वो चीज़ें आप करना शुरू कर देंगे, आपके सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपके पास निकल जाएंगे। आज तक जिसने भी बिलियन डॉलर कंपनी बनाई है, बड़ी कंपनी बनाई है, बिलियन डॉलर इम्पैक्ट किया है, लाखों करोड़ों लोगों को इम्पैक्ट किया है, उन सब में एक ही चीज़ कॉमन है, उन सबको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से आता था। भगवान ने सबको 24 घंटे ही दिया है, आपको भी 24 घंटे, मेरे को भी 24 घंटे, और उन लोग को भी 24 घंटा दिया है। बट सिकंदर वही होगा जो उन 24 घंटे का यूटिलाइजेशन बड़ा अच्छे से करे। ठीक है, कि स्कूल भी मैं देख लूँ और यहाँ पे भी कर लूँ ढंग से, ये अभी के लिए इम्पोर्टेंट इसको पहले करूँ, ये थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट इसको बाद में करूँ, और उसके हिसाब से मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करूँ। आपकी स्टोरी डिफरेंट होगी, उस बिलियनियर की स्टोरी डिफरेंट होगी, सबकी स्टोरी डिफरेंट होगी, लेकिन सबको अपनी स्टोरी बनाने का हक है बिल्कुल। तो आप अपनी स्टोरी बनाइए बिल्कुल। होप आई एम क्लियर। यस सर। तो सर एनी लास्ट नोट जो आप स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे टू द यूथ ऑफ इंडिया? मैं मेरा बस यही चीज़ रहेगा, मैं बड़े ही सिंपल सादे शब्दों में कहता हूँ, ज़्यादा भारी शब्दों का यूज़ बिल्कुल नहीं करता हूँ, ताकि बच्चों को समझ में आए और इजीली कनेक्ट करें। तो एक ही चीज़ मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि ज़िद